Hello, everybody. Welcome to Step Up Lives. Today's video is another special video where we'll have a student experience from someone who has actually been placed with AccioJobs, who has done their full stack development course and has succeeded in their lives, to say the least, right? And moved on to their next phase of the career. So we have Utsavi Patil with us from this program. She has been actually placed with this. Utsavi, very warm welcome to the program. What are Thank your initial thoughts about it? Yeah, when I had this program, the initial thoughts were I just wanted to start my journey from just support projects to a developer project. So that's why I joined the AccioJob. Correct. So I think what we will do, we will actually have Utsavi talk about all complete of her journey. I mean, what are her projects. We'll also ask her what is her package. Don't worry, guys. You have to have all the information that you need, right, to kickstart your career and move on to tech. Before that, I'll just give a quick overview of this program so that for the audience who are maybe watching it for the first time, that AccioJob is a platform where people can transform their careers into a software developer, that become a full stack developer and earn salaries up to 40 lakhs per annum. This is their website that you see on the screen. The link of this program is also there in the description. And they have been able to maybe place more than 5,000 plus students and change their lives. They have a couple of types of programs, Sapling and Pioneer, which are, one is pay after placement, one is a prepaid program with 100% job guarantee. We'll ask everything that Utsavi about the program. Also, these are the fundamentals, all information. There are a lot of 300 plus startups and top MNCs that have they've been hiring students from AccioJobs. So we will have all this information discussed so that you have the first-hand experience about the program and all the information that maybe how this really works, and probably what has been the experience of students who have joined AccioJobs. So let's start with the first important question that I mean, what has been your journey? I mean, are you someone who has been a fresher? You had some experience, or how did you find AccioJob, and what, I mean, triggered you to go for that? Yeah. Uh, my name is Utsavi Patil, and I graduated in BTech Electrical from Nirma University in 21. So at that time, because of just like electrical students, I also had a second rank in my whole batch. So you can see कि मेरा electrical अच्छा ही था. So that's why I started my journey in one of these companies. There I got the opportunity about manufacturing industry. So I was working in production. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट मैं जितना काम कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे पे नहीं मिल रहा है. That was the concern, like because I have spent so much of time and efforts during my BTech, and at the end I am not able to get that level of pay that I need. But नहीं मिल रहा था. तो एट द सेम टाइम 21 पास आउट मीन्स यू कैन थिंक अबाउट लाइक उस टाइम पे कोविड भी था. So Correct. due to that, it actually affects in our placements, especially in electrical mechanical core branches placements. So that was the trigger point that I decide. Once I started working in production, I decided like I want to move in some other industry. But at that Right. time, I was not sure that which particular industry I should go. So मैंने अपनी capabilities के हिसाब से I decide that which are the good options. I had two options, like one of them is IT and second one was management. But I'm not that much good in terms of that accounts or accounts related maths or profit and loss calculation. So that's why I choose the IT. And one more thing, I always had an interest in IT. Not in IT as an industry, but about just coding. So Right. even in my 8, 10 standard, I learned the C language, but उसके बाद तो सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट थे तो वो छूट गया. बट जब कॉलेज स्टार्ट किया तो उसके पहले भी आई ऑलरेडी लर्न द सी फ्रॉम स्क्रैच अगेन. And during the college, I always had an interest in these subjects because in first year we have a subject for C language. So there Correct. at that subject I really did well apart from other subjects. So my Correct. professor was very impressed that you are doing very good apart from like you have a branch different branch but you are doing good. So she suggested me that you can even start learning from this outside as well. तो उस टाइम पे Correct. मैंने थोड़ा सा बेसिक लाइक सिंटैक्स रिलेटेड जावा सीखा था. बट इट वाज नॉट कि उसको एज अ करियर मैं प्रोफेशन देखूंगी मे बी आगे जाके.
correct, बट जब मैंने यहाँ पे काम किया तो आई रियलाइज कि ओके अब तो इंडस्ट्री चेंज करनी है. सो एट दैट टाइम मैंने डायरेक्टली मतलब देखा कि मुझे एक तो पहले से बिकॉज 2-3 इयर्स हो गया था और मैंने कोड नहीं किया था. तो correct, बिकॉज प्रैक्टिस छूट गई थी तो आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग कि मेरा एप्टी अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है, तो मुझे टीसीएस, विप्रो, दिस टाइप ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी से ऑफर आ गई थी. सो correct, मैंने अप्रॉक्स 5 महीने काम किया था प्रोडक्शन में. उसके बाद आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, एंड correct, देयर आई ज्वाइन. एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी एक्चुअली मेरा एक बैचमेट है हु ऑलरेडी ज्वाइंड एक्चुअल जॉब, and when correct, we passed out in July, he already had an offer of 12 plus LPA in paid local, which is one of the correct, very good startup, and they are also hiring from AccioJob. So correct, when I was just moving in this IT industry, I got his contact, and he told me about this course. Like they can make sure that you must be ready for a developer profile rather than these support related profiles. Because correct, जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे कोड कोड करना आता था, but they were like there are some tickets or you have to just solve those tickets. There are many terms of code already written in 1960s 90s, correct, and correct, you just have to update them. You don't right, have to create a whole project. So यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको वो चांस नहीं मिलता कि आप अपनी जो सिस्टम डिजाइन या आप देख सकते हो इंडस्ट्री में, आपको खुद को नहीं करना है, बट देर आर मस्ट बी अ सीनियर्स who can guide you कि in this way the actual system designs works, in this way how the developers work. So that correct, opportunity मुझे चाहिए थी कि ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने को मिले. So right, that's why I joined the AccioJob in Jan 22. Yeah, Jan 22 I joined the AccioJob last week. right, right. And after that 6-7 I guess in um, September. Yeah, in September I got a laws opportunity. Laws I had, and I had an interview. All the process took 1 month, and October I joined laws India. Okay, so that's excellent. I mean, the overall journey we could understand from you regarding that someone who was actually not been from the IT background, right? Someone who's Yeah. from the electrical engineering background, then took up an opportunity in service based. Now has been also moving now towards the product based industry, right? And so I think that is a good journey, inspirational journey. Also, we want to know from you, right, a little bit more detail on the fact that how has been your curriculum and structure, right, for the AccioJob? So when you joined in Jan 2022, I'm sure the program has also evolved a lot over a period of time at this point of Mm. time. But we want to understand, right, how is the structure like? For example, if somebody joins a boot camp today, or probably in your case, somebody would have joined. How does that work? Does it work a full time, every time, live classes, recorded classes? How are the doubt sessions, mentor sessions? Can you just give us a little bit of structure that how Yeah. AccioJob as a boot camp was for you in terms of structure, curriculum? Yes. Actually, when I joined in Jan 22, at that time they have a structure like I joined for there was only one course which is Right, full stack development, and there are two options. You can pay before once you joined, or you can pay along with the EMI, and the right, second one was pay after placement. So right, I joined for pay after placement one, which had greater than 5 LPA. You can enroll for pay after placement. And right, at that time we had a structure of like first few months we will learn about DSA. After that we will learn about front end, and then we will learn about back end, and overall this was the curriculum. About from the classes I can say I have a two journeys, because I was working, and at the time I joined an actual job. So 3-4 months I learned with the AccioJob only, but after some time I decided that I should leave my the company who I'm working, because I thought that that the level of work is not just improving my capabilities, but it is something that just pulling me from the practicing. So that was the reason I left that company and started preparing for the full time with AccioJob. So I correct, have both experiences, like how can you, how I manage to work with work at the same time active job, and when I was doing a full time active job, I had both experiences. And also,
apart from doubt session, we always have classes on night, so that was a pretty good part because mostly people work on daytime, and they can get a live classes in night as well. So Right. we had a class from majorly from 8 to 10, and after that we have a doubt session, or we can even book a doubt sessions as well. So for me, the best part was we can. My batch manager told me that you can have a unlimited one-to-one mentorship sessions, and in those sessions you can actually ask the doubts. Like people thought about, like, what is the mentorship? There will be someone who will tell you that how you should prepare in DSA, or they can guide you how to make a resume. But it is more than that. You can even ask your doubts to that person, and that one-to-one session is actually about 1 hour. So for 1 hour, that particular mentor is allocated to you only, and you just have to ask the doubts. So what I Correct. used to do, I just collect my all 15 doubts, or 5 to 10 doubts, or maybe at some time you can have those doubts, like I'm not even getting the questions as well. Not a single, what should I, how can I start with the question? So Correct. to understand how you can you trigger and those particular thoughts, a mentor can guide you rather than Right. for a group sessions. So that's why I mostly used a one-to-one mentorship session. I just alone accumulate all the doubts and ask them. And Correct. most supportive part from my batch manager, he always support me. Like, we always had a call in 15-20 days, that what we actually discuss my whole daily routine, like how much time I'm giving for my work, how much I can allocate for my coding practice, how much I'm giving for Accio classes, and at the end, how can I improve more and more time with quality. So that were very good. Right. I guess So this was a very good experience. right. So, I mean, it looks like a very focused approach, yeah, in terms of like somebody's like following up with you, right? What's going right, Mhm. what's not going right. I mean, how are you structuring your day? How are you progressing? So it looks like a very structured thing. Before we go ahead, I'll just for the audience, benefit of the audience, because you mentioned about the prepaid and the postpaid part of it. I'll just highlight on the screen that actually there are two programs at this point of time, right? I mean. After which Utsavi has graduated, I think they have now two structured programs in terms of like sapling program, which is a 100% job guarantee program, which is pay upfront one, which has a minimum guarantee of 3 LPA, and the Pioneer program, which has I think which was very similar to Utsavi, right? Am I right, Utsavi? Yes, Is that right? yes, yes. This one is Pioneer. Correct. So Pioneer has the guarantee of 5 LPA for people, and they have to pay after placement. And I think a lot of students are a little apprehensive also about this pay after placement thing, because I think like as they show on their website as well, that if it's less than 5 lakhs, you don't have to pay anything, and then it's a certain percentage up to a particular period, and the total amount is also visible on this link. And this is the one which is for the upfront thing, right? So before I go ahead, I think I mean a lot of students, yeah, Utsavi, are a little apprehensive about the pay after placement thing, right? Because Yes, I understand they have their own concerns regarding, right, you are signing an ISA, right? Because it's a yes. pay after program, you have to sign an ISA. So what was your feelings, right? I want to put this question from a student perspective, because a lot of students on our channel comment that तो ISA तो मतलब fraud है, ISA तो मुझे फंसाने के लिए है. I mean इस तरीके की Of बातें course. लोग करते हैं. आई एम नॉट डिनाइंग कि वैसा फियर या अप्रीहेंशन नहीं हो सकता है लोगों के मन में. सो व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट साइनिंग ऑफ दैट आईएसए, जैसे आपने जायदाद के पेपर साइन कर दिए हो, ऐसी फीलिंग दुनिया ने दी आपको, या किस तरह का था, एंड व्हाट डू यू फील एट द एंड नाउ, राइट? व्हाट इज योर Yeah. बोथ फीलिंग्स? आई वांट टू नो. एक्चुअली मेरे टाइम पे तो मेरा फ्रेंड था जिसने ऑलरेडी एनरोल किया था, बट स्टिल आई हैड दैट फीलिंग. दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स emphasize that you go for pay after placement rather than just paying prepaid. राइट. The amount is different, of course. It is more in pay after placement, but it gives you an surety that yes, you will get placed after all. And from my concern, I'm like, I literally because on a first day, Yashwardhan Burad sir, who is a co-founder of AccioJob, they took the राइट. session and they actually read the whole ISA document. They explain each and every clause, and because I was so much concerned, so I also had a discussion with my one of the family lawyer,
So they also saw that yeah, this is a right agreement, because we saw like there are very like बहुत सारे fraud होते रहते हैं industry में, but I totally say that yes, if you are signing any these type of agreement, just ensure that yeah, this is the right agreement and come from the right resource. So that was my feeling. Right. So I think it's a very fair and open argument. I think a lot of people may be Yeah. a little bit having their clarities in their thoughts about, right. You get it reviewed from your people as well, right? I think this is a good Yes. thing to do, yeah, because whenever you are enrolling into something, you be really aware what you are doing. So I think that's the best way forward, ideally in such cases. Okay, so Hmm. let me next put another question to you regarding the mentors, right? So I Hmm. mean, how has been the experience with the people who are mentoring you or people who are teaching you DSA or these topics of front end, and how are they? Honestly, we want to understand from you: are they capable, are they understanding, Yeah. are they entertaining doubts, or are they like, no no no, ye to tumhe pata hi hona chahiye? Because a lot of students are non-tech as well, right? So because sometimes a lot of people do not have even background. So you had a little bit of background for maybe service based industry, but a lot of people have no really Yes. background in coding, right? So they have Yeah. a little fear that maybe are the mentors capable to handle such kind of a scenario, or are they technically sound for that matter? What has been your experience with the mentors at AccioJob? Yes, in our class, I can say that 30-40% people were from non-tech background as well. Like there was people who did a BCom, BCA, even some medical engineering, biomedical engineering, or from laws as well. So there were a lot of people who haven't did a normal syntax of any coding. But I must say that in a AccioJob, I what my experience was, from starting they have a started from the scratch, like what would be the first statement if it is a Java, then why should you write an import. So that is simple, from that first line to last curly bracket close, I can say they explain everything. But Right. I say that you just have to keep calm, because the first time when you are learning any language, it takes a lot of effort from your side as well. But yeah, Correct. if you have any single doubt, they definitely appreciate and they solve at the same time. I must say that go for more and more live lectures, because you can ask the doubt at the same time. And Correct. I can say about my instructors for DSA, we had one instructor who who is working in browser stack, and he did actually really well. Like he was capable to teach us a DSA, because Correct. that person have it's not about the age, it's about the knowledge and experience that person already have. So I Correct. think that matters a lot. He was also 21 pass out, I was also 21 pass out, and I am learning from him, so that's Correct. not an issue at all. And I can say that DSA actually starting it takes time to understand, but once you are with comfortable with all the syntax, then it is like very smooth. You have every single day you have, okay, ये data structure हो गया, इसके ये practice करते हैं. Now the next day new topic and अपन ये practice करते हैं. Correct. Starting में you will feel like okay, there are some people who have a prior knowledge, but जैसे जैसे आप एक normal बेसिक से इंटरमीडिएट एंड हार्ड सेक्शन तक जाते हैं, जब तक आप मीडियम लेवल रीच कर देते हैं, तब तक सबका लेवल सेम ही हो जाता है. एंड Correct. आई कैन से बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे कंप्यूटर के लोग थे, जब तक हम डीपी ग्राफ तक पहुंचे तब हम सबका लेवल सेम ही था, एंड आई वाज लीडिंग ऑन बोर्ड. सो ऐसा कोई होता नहीं है. जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट हैव अ करेज, लाइक ओके अपन अब धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, बट अपन कैचअप कर लेंगे. For Correct. front end, we had an instructor who was working in Visa, and like you can understand, he was also 20. He was, I guess, 22 pass out, but yeah, he was doing really well. Like at the same time, he always had a discussion. We always have a discussion how we can talk, because front end is about more about exploring rather than just mugging up or doing the practicing. Front end is more Correct. about, like any type of development is more about exploring how you can Right. explore things. And he always gives us a real time example, like if we are learning any dome related topic, then he actually show us, okay, this is the Amazon website, this is the Flipkart website, you can design like this, or we can make something like this, we can clone this.
So Right. these were so good. Even right now, I was learning a back-end development, and instructor is working in Mintra. So uh, uh, because they have been working in so many good industry or so many good companies, that experience also helps. Because जब Correct. अपन कोई स्टार्टअप में काम करते हैं तो they also told कि ओके मिंत्रा में बैकएंड की इस तरह से डिजाइन हो सकता है, या यहाँ पे Right. ये पर्टिकुलर इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, सो व्हाई दिस थिंग्स कैन कम. जब अपन सिर्फ नॉर्मल लेवल पे सीखते हैं तो वी विल थिंक अबाउट ओके एक दो चीजें होंगी, या Correct. एकदम बेसिक लेवल होता है. वी थॉट ओके क्या कितनी आएगी, 10 15 20, और इतने से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा. बट वी Correct. एक्चुअली हर्ड फ्रॉम देम कि नहीं, इट इज 10 million रिक्वेस्ट पर मिनट. Then we realize okay, this is that much complex, we can learn it. Correct. So Absolutely. those so these type of real type experience जब आपको पता चलते हैं, then it improves your development skill. Correct. Perfect. I think Utsavi, you have a very good insight on this. I mean, for all the students, they can understand. Let's come to one of the most important, most asked questions of the all our comment sections. That share your interview experience, and if it's possible, that if you can share maybe where you're placed. I mean, on what has been your package or something like that for all the students' clarity. I want to also understand your interview experience, because a lot of people who are like that when I what are the rounds probably. If you can share a little bit, don't share the interview questions, but maybe share the number of rounds that you had, probably just the overview of the recruitment process that you went through, and how was AccioJob, I mean helping you out in that, and if you can give us a journey, and maybe at the end of it also your maybe a package, and what role are Yeah. you in currently, a little bit, for that students can have a little bit of inspiration. Sure, sure. When I got the loss opportunity, I guess August last week, we got a notification that Loss India has came for recruitment, and तब तक तो मेरा resume was ready, pretty enough कि apply कर सकते हैं. So I applied, and uh, actually it has total three different rounds. First one was a test. Uh, दूसरा test including coding assessment, MCQ plus coding assessment. Second one was a technical interview. Third was HR. And in first, and I can say MCQs, 10 to 15 MCQs are only, but दो coding questions थे. And I guess that was the most important one. जितना आप coding question पे ध्यान देंगे, I can say मेरा इतना MCQ was good enough, but मेरे दोनों कोड वर्क कर गए थे, तो that Correct. was a pretty good part. तो उस वजह से मैं शायद शॉर्टलिस्ट हो गई. एंड देन इन टेक्निकल इंटरव्यू, मेरा एक ही टेक्निकल इंटरव्यू था, एंड वो भी 1 आवर का था. तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो 1 आवर का टेक्निकल इंटरव्यू है पूरा ही, मतलब जब टाइम आपके पास कम होता है तो उसमें इंटरव्यू ट्राई करते हैं कि आप कितना ज्यादा आपको इवेल्युएट कर पाए. सो Correct. फॉर दैट मुझे एक्टिव जॉब से फुल ऑन लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक सपोर्ट है, इवन अभी भी सपोर्ट है. तो AccioJob की जो स्टाफ है, दे इवेंचुअली टेल अस, लाइक फर्स्ट उन्होंने हमको इवन बिफोर एनरोलिंग फॉर लॉज इंडिया हमारा मॉक इंटरव्यू हुआ था टू मेक श्योर दैट ओके वी आर केपेबल फॉर दिस कंपनी. तो Correct. वहां पे हमारा मॉक भी हुआ था. उसके बाद जब कोडिंग असेसमेंट हुआ, उसके बाद मैंने अपने साइड से, बिकॉज आई वॉज श्योर कि मेरा हो जाएगा, आई गेस दोनों कोड वर्क कर गए थे, तो मैंने Correct. अपनी साइड से ही बैच मैनेजर को बोल दिया था कि मुझे एक मॉक करवाना है. मुझे आई गेस पता था कि शायद एक्टिव की तरफ से होगा, बट इट्स जस्ट टू इंश्योर कि अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम है अपने पास, Correct. सो लेट्स हैव अ वन मॉक. तो मॉक भी मुझे फुल फ्लेज चाहिए था, जैसा कि टेक्निकल में होना होएगा, बिकॉज जनरली आप मॉड्यूल में क्या करते हैं कि एक डीएसए का कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स है, और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, या तो डेवलपमेंट में आप क्लियर हो कि फ्रंट एंड के ही आएंगे. बट ऐसे इंटरव्यूज में आपको सब कुछ रेडी रखना है इन अ होल पैकेज. तो इसलिए मैंने फर्स्ट एक मॉक लिया था. उसके बाद एक्टिव की तरफ से भी हमको पहले से आया था कि आप पहले टेक्निकल के पहले एक, जब हम शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसके बाद शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को पहले आया था कि आप पहले मॉक दे दो, सो दैट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए. सो बिकॉज मैंने टोटल 2 मॉक दे दिए थे, तो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अब तो हो सकता है. एंड दोनों मॉक में हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें जितना भी रिज्यूमे फोकस्ड है, वो रिज्यूमे में जितने हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं या हमारा पहला कोई एक्सपीरियंस है, हाउ टू शोकेस, एंड एट द सेम टाइम जब इंटरव्यू डीए से क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको कैसे अप्रोच करना है.
एंड एट द एंड बिकॉज हमने प्रोजेक्ट्स किया तो डेवलपमेंट रिलेटेड तो आएंगे ही क्वेश्चंस. सो दैट वाज द होल थिंग. और उसके बाद एचआर के लिए भी आप मॉक कर सकते हो. बहुत सारे Correct. मॉक बहुत सारे लोगों ने मॉक किए थे. एंड एचआर वाज आल्सो प्रीटी इनफ कि दे आस्क कॉमन क्वेश्चंस लाइक आप अपना इंट्रोडक्शन या आपने प्रायर कौन सा एक्सपीरियंस लिया था एंड पर्टिकुलरली लॉज इंडिया के लिए आपको क्या पता है. क्योंकि बहुत सारे लोग ना पहले अप्लाई कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सी Correct. कंपनी में है. Right. जब आप एचआर में जाते हो देन दे रियलाइज ओ शिट, मैंने तो पढ़ा ही नहीं ये कंपनी के बारे में. सो आई बिल्कुल. मस्ट से कि जब आप अप्लाई करते हो और अगर आप ये राउंड तक पहुंच जाते हो तो बी मेक श्योर कि आप उसकी वेबसाइट पे देखो उनका पर्टिकुलर कौन सी इंडस्ट्री में काम है. नो डाउट कि आप आईटी में काम करोगे, बट वो पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन सी इंडस्ट्री में जा रही है. जैसे लॉस इंडिया रिटेल इंडस्ट्री में है, स्पेशली होम इम्प्रूवमेंट में. तो अगर आप ये सारी डिटेल्स भी जब उनको बताते हो तो दे ऑल्सो फील कि ओके ये पर्सन, ये कैंडिडेट एक्चुअली इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में, रादर जस्ट जस्ट टेकिंग एन ऑफर. ही एक्चुअली इंटरेस्टेड, ही और शी वांट्स टू वर्क विद अस. सो Right. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड पूरा एक मंथ लगा था, मतलब फॉर एवरी सिंगल राउंड वी हैव वन वन वीक गैप. सो पूरा एक मंथ लगा था. उसके बाद ऑफर लेटर केम एंड आई जॉइन लॉज इंडिया इन अक्टूबर. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आई आई गॉट अ पैकेज ऑफ 12 प्लस एलपीए. Oh, that is excellent, I think, and I mean, this is a really inspiration by me because a lot of people, like for example, if they are working currently in, I mean, service-based companies or even non-IT companies, probably take 5-7 years to reach this number. Yes. Probably because some of them are working at 2 LPA, some of them are working at 3, 4, 5 LPA, and Even I was I think working in 3.6 LPA before that. yeah. So I mean, this is a clear indicator for everyone who's watching that. I mean, if you work hard, because it's a from speaking to you, also we get that feeling that you have been a little of a very focused and a hardworking individual as well. Because I saw some of your sentences where I also asked for a mock interview, and they were anyway scheduling one, but I was the one who was like, "नहीं नहीं, मेरे को एक mock करना है." So your also, I mean, dedication is visible, right? Because a lot of students should realize that whatever program you may join, right, AccioJob or any other program you may join, but your student as someone who has also to drive the thing that the drive the change and probably be dedicated enough and be motivated to also work around. I'm sure AccioJob is a, I mean, very good enabler. They always try to push you, try to help you out. But I think as a student also, it's also your responsibility, right? And which was visible in my opinion, and the results also are to show that your hard work, right, your decision also to, I mean, leave your job, right, and work, I mean, study parallelly, right? How did that go? I mean, because I want to know, because a lot of students who are maybe working already would be like a little apprehensive that should they leave their job or not, continue with the queue along with it, or a programming boot camp. What is your view on it? Just wanted to know it from that point of view. हम्म. या एक्चुअली मेरा ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा थॉट था कि लेट मी गेट इनटू द इंडस्ट्री वंस. तो उसके बाद मेरा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बन जाएगा इन आईटी, भले ही सपोर्ट हो, डेवलपर हो, कोई भी प्रोजेक्ट मिले, बट एटलीस्ट मेरा एक कोई भी ब्रांड नेम जुड़ जाएगा कि ओके यू हैव एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑन इन आईटी. बट जब मैंने एक्चुअली के साथ डीएसए लर्न लर्न करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि मुझे प्रैक्टिस में और ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए. बिकॉज आई कैन शेयर यू कि मेरी डेली रूटीन्स क्या थे. मेरा जॉब अप्रॉक्स 8 आवर्स का ही था, बट ऑन डेली बेस. उसके पहले और उसके बाद के जो टाइम में 2 घंटे तो क्लास के हो गए. उसके बाद एक आध घंटा डाउट सेशन का हो गया. एंड आफ्टर दैट मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली लाइव सेशन प्रेफर करती हूँ रादर देन रिकॉर्डिंग. अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जॉब जो चाहिए वो नहीं लगी, तो आई आई ऑलवेज टोल्ड कि आप लाइव सेशन पे जाओ, सो दैट आपके नोट्स तभी बन जाएंगे ऑन द सेम टाइम. आपको वापस वो चीज देखने की जरूरत नहीं है. जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो उसमें 10 तरह की मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि किसी ने ये काम दे दिया, ये काम दे दिया, तो आपने छोड़ दिया, फिर थोड़े दिन के बाद आप वापस करोगे. लाइव Correct. सेशन इज लाइक कि अभी चल ही रहा है, आपको उसी टाइम पे नोट्स बनाने हैं. तो वो एक कंसिस्टेंसी रह जाती है. उसके बाद मैं क्लास के ही जो क्वेश्चंस हैं वो वापस एक बार प्रैक्टिस करती थी. एक्चुअल जॉब में उनका जो पर्सनल पोर्टल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपके सारे नोट्स वगैरह होते हैं. वहां पे एक जिम सेक्शन भी है. तो जैसे
बाकी के प्लेटफॉर्म्स हो गए कि लीड कोड, जीएफजी, तो वैसे उनका भी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर उनके यहाँ जितनी कंपनीज आई है उसके मोस्टली आस्क क्वेश्चंस वहां पे रखे होते हैं टॉपिक वाइज। सो व्हाट आई यूज टू डू कि पहले अगर सपोज एक दिन मैंने स्टैट पढ़ा है तो स्टैट के रिलेटेड मैंने क्लास के क्वेश्चंस देख लिए। फिर जो डेली बेस पे आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस ओनली, तो वो मैं ट्राई करती हूँ ऑन अ डेली बेस ही कंप्लीट करने का। और उसके बाद अगर थोड़ा-सा टाइम बच जाता है तो आई स्टार्ट विद द जिम सेक्शन कि वहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया। तो ईज़ी, मीडियम दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे डीएसए में और एफर्ट्स डालने हैं। बिकॉज़ मैंने मीडियम तो सीख ही लिया था, मीडियम लेवल तक, और जब एडवांस का आया था टाइम, तब माय बैच मैनेजर टोल्ड मी कि आप अच्छा कर रहे हो। अगर आप एडवांस में भी यही कंसिस्टेंसी के साथ आगे करोगे तो आई आई टोटली अश्योर कि आपको 10 प्लस का तो लग ही जाएगा। बिकॉज उसके पहले आई कैन से कि मेरा खुद का एक्सपेक्टेशंस व्हेन आई जॉइन द कोर्स वाज कि 7 to 8 का लग जाए, आई वाज हैप्पी। करेक्ट, I actually accept this कि मेरा 7 to 8 लग जाए, आई वाज हैप्पी इनफ। कि फ्रॉम करेक्ट, 3 to अगर 7 8 लग जाता है तो इट्स ओके। एंड राइट, बिकॉज मेरे बैच मैनेजर इस पुश की ओके आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इससे भी आगे अगर आप एडवांस के और अच्छे कर देते हो ग्राफ्स, बीपी और ट्रीज, तो आप 10 प्लस भी फोड़ सकते हो। तो बिकॉज़ ऑफ करेक्ट, दैट कि जब एडवांस स्टार्ट हुआ, आई फ़ील कि मुझे और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और मेरे ऑफ़िस में भी कुछ थोड़ा काम ज़्यादा आ रहा था। तो करेक्ट, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मेरी फैमिली एक्चुअली मेरे पास उतना था फंड। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली ने मतलब टोटली ऐसा सपोर्ट दे दिया, बट बिकॉज़ राइट, मैंने उसके पहले भी जॉब किया हुआ है, तो उसके करेक्ट, कुछ फंड्स थे मेरे पास। तो राइट, वो उस हिसाब से मैं मैनेज कर सकती थी। और मैंने इतना तो डिसाइड कर लिया था कि मेरा जो गैप आ रहा है वो 3 to 4 मंथ्स ही होगा, नॉट मोर देन दैट। तो उस करेक्ट, हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके रखा था कि इतने फंड्स है तो अपन इतने टाइम तक मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइड कि अपन लीव करते हैं जॉब एंड ट्राई टू मोर फोकस। या डीएसए तो कर रहे हो, उसके साथ मुझे प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, उसके साथ मुझे रिज्यूमे भी रेडी करना है। और ये सारी चीजें आई वांट टू मेक श्योर कि जब कंपनीज आए तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा मतलब ट्रिगर ना हो जाऊँ कि ओके अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, प्रेशराइज ना हो जाऊँ। करेक्ट, उस टाइम पे ये सारी चीजें रेडी हो मेरे पास। सो राइट। फॉर दैट रीजन आई लेफ्ट द जॉब। I think it's a good insight. I think, and you were very much balanced. I think at a very young age, you've made a very balanced point of view. That I mean, whoever who's thinking to leave their job probably have to also start with these programs parallelly initially. Maybe come to a Hmm. point where they think that their financial stability is a little better, Yes. right, to take that call, and also they are also getting more and more confident about this, right? कि अभी मुझे लगता है कि हाँ मैं मिनिमम तो उतना तो फोड़ ही लूंगा, राइट। और ऐसा तो Yes. नहीं होगा कि मुझे बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ऐसे में एक पॉइंट पे आने के बाद ही शायद मूविंग Yes. अवे फ्रॉम दैट फुल टाइम जॉब को छोड़ देने वाली बात, आई थिंक इज अ स्टेप बाय Hmm. स्टेप प्रोसेस। कई लोग बोलते हैं कि अरे यू आर Exactly. नॉट ब्रेव इनफ। आई थिंक आई Yes. ऑल्सो पर्सनली बिलीव इसमें कोई ब्रेवनेस की करने की बात नहीं है। यू हैव टू बी हाँ. लॉजिकल, यू हैव टू थिंक स्टेप बाय स्टेप, and you have to make a calculated, I mean programmed way of maybe exiting from there and entering into something. Yeah, yes, you wanted to say एग्जैक्टली। something? और यस, आई वांट टू ऐड Right, वन थिंग कि ये तो मेरा पर्सनली डिसीजन था कि मुझे ऐसे लीव करके कंटिन्यू करना है, बट जो right, मेरे फ्रेंड का हुआ था, तो उसका जब कोर्स चल रहा था तब हम 8th सेमेस्टर में थे। तो उस correct, टाइम पे उसने जॉब उस टाइम पे उसकी ऑलरेडी एक कंपनी है जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट ही आया था। तो उसका 7 LPA का लग गया था, उसका इंटर्नशिप उसका चल रहा था। उसके साथ हमारे 8 सेमेस्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज भी आना था, तो उसका कॉलेज भी चल रहा था। उसके correct. अलोंग विथ उसने एक्यो जॉब भी किया और उसने प्लेसमेंट फोड़ दिया। तो आई कैन से कि ये बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल डिसीजन है, बेस्ड ऑन सबके अपने-अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट आई Right, कैन से कि अगर आप एक पॉइंट पे आते हो कि बहुत सारी चीज़ें अगर ये सपोज फॉर मी फाइनेंशियली उतना बैकअप था कि 3 to 4 मंथ्स हो सकता है। सो correct, यू कैन थिंक अबाउट दैट। पूरा ही छोड़ देना एंड ऐसा करना, आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि आपको पहले तो एक्सपीरियंस मिल ही रहा था, राइट? right, आप पहले तो जॉब इन केस अगर कुछ भी कर रहे थे बट एटलीस्ट जॉब तो कर रहे थे। तो अलोंग correct, विद दैट आप कोर्स भी कर रहे थे, तो कोर्स में आपको और ज्यादा ऐसा लगता है खुद से कि ओके, मेरे मार्क्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आई कैन डू मच मच मोर बेटर।
देन गो फॉर दिस टाइप ऑफ डिसीजन, एल्स मैं नहीं बोलती किसी को भी ऐसा करना। बट इट Perfect. वाज I जस्ट think कि मेरा अपना पर्सनल था। right. That's a good view, I think, and it's a balanced view. In my, I appreciate that at a young age you made a very balanced and matured view to it. Right? काफी young लोग बोलते हैं अरे छोड़ दो, सब छोड़ नहीं दोगे तो मतलब प्लान बी होगा तो प्लान ए पे फोकस नहीं करोगे। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो. You go step हाँ। by step, and I think it's a good thing to do, and it's good to hear you that. Let's come to the another aspect that what have been the projects like, because I think a lot of students have been also commenting on our videos that please do ask some of the students who come there at your place for this discussions that what kind of projects are being done with the help at AccioJobs, which probably help the students get placed, because a lot of students get those placements maybe because of the projects that they made, because that's the real time implementation of the skills. So what was your experience of projects, and maybe was it helpful for you to get into those things? यस, प्रोजेक्ट्स मेरे लिए थे इम्पोर्टेंट। आई कैन से कि मेरा मोस्टली जो थियरी डिस्कशन है 10 to 15 मिनट्स प्रोजेक्ट्स पे ही हुआ था। इट इज़ नॉट कि उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि आपने डिज़ाइन कैसे किया या आपने ये कहाँ से सीख लिया, या सपोज़ मैंने मोंगोडीबी यूज़ किया है तो उन्होंने बोल दिया नहीं, नहीं मुझे तो यही स्ट्रक्चर और सिंटैक्स का मतलब बताओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मेरा जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने नॉर्मल टू डू लिस्ट ही बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बट Correct. मैंने वो जो टू डू लिस्ट है उसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया था एंड प्रेजेंट किया था कि इट लुक्स लाइक कि ओके ये पर्सन ने बहुत कुछ अच्छा किया है। Correct. नॉर्मल टू डू लिस्ट ही है, बट मैंने उसके अंदर रिएक्ट यूज किया था, फिर बैकएंड के लिए नोड यूज किया था, डेटाबेस भी ऐड किया था मोंगोडीबी, और सब कुछ क्लाउड पे डाल दिया था। तो जब भी Correct. आप यूज करते हैं आपको एक्चुअली में कोई लोकल होस्ट की जरूरत नहीं है, कोई कोड की जरूरत नहीं है। आज जस्ट ओपन अ वेबसाइट, डिप्लॉय भी किया था तो आपने वेबसाइट ओपन करनी है, डाल देना है जो भी आपको टू डू लिस्ट करना है, सारे फंक्शंस ऑपरेट होंगे और आपको किसी कोड की जरूरत नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो Correct. नॉर्मल ही प्रोजेक्ट है, एकदम मोर देन बेसिक प्रोजेक्ट है, बट आपने जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि इंटरव्यूअर को आइडिया आए कि आप नॉर्मल प्रोजेक्ट में भी आपको ये सारी टेक का नॉलेज है। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके अलावा मेरे एक दो और प्रोजेक्ट्स थे कि जिसमें मैंने एक तो जावा के बेस पे किया था, नॉट दैट मच गुड बट इट वाज फेयर इनफ कि मैंने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया था एक नोटपैड बनाने के लिए। तो वो टेक्स्ट एडिटर बनाया था विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो वो एक अच्छा था फॉर लाइक डीएसएस स्टफ। एंड उसके अलावा फ्रंट एंड में वेबसाइट्स बनाई थी, बट उसका मेन इंपॉर्टेंट फ्रंट एंड के लिए कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो, डिजाइन इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट। सबको लगता है कि सिर्फ कोड कर देंगे, ये कलर ऐड कर देंगे, ये फॉन्ट ऐड कर देंगे, इट्स नॉट, इट Correct. इज नॉट लाइक दैट। आप जब सीखते हो फ्रंट एंड, आपको इंस्ट्रक्टर भी बताते हैं कि यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स यूज करके मैंने एकदम नॉर्मल फ्रंट एंड की वेबसाइट बनाई थी। एंड आई कैन से बिकॉज जब मेरा कंपनी में करंटली अभी मेरा जो वर्क चल रहा है, तो उसमें मेरे एक सीनियर ने भी मुझे वही बताया था कि हमने आपका रिज्यूमे देखा था एंड दैट्स व्हाई वी थॉट कि आप ये वाला प्रोजेक्ट खुद से कर सकते हो। तो दैट आई कैन से कि आप हो सके उतना ज्यादा जो इतना नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कि 10-15 टेक एक ही जगह पे यूज कर लिया, बट जैसे फ्रंट एंड के लिए एक है, बैक एंड के लिए हो गया, डेटाबेस के लिए हो गया और ओवरऑल फुल स्टैक हो गया। तो उसके लिए आप तीनों के लिए अलग-अलग जो बूमिंग टेक्नोलॉजीज़ है आपने यूज़ की और आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको अमेज़न का क्लोन ही बना देना है कि एकदम वर्क करना चाहिए अभी ये, इसके अलावा तो मतलब ऑर्डर होने चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। इट्स Correct. नॉट लाइक दैट। बट आपको एकदम बेसिक को बहुत अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर पाओ एंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो अभी यूज़ हो रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ तो आपका हो जाएगा। Right. So another question I want to ask you is that, which is very common to us. I mean, a lot of students ask this question that कि जॉब का जो टेस्ट है वो बहुत टफ हुँ। है, हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, राइट? हाँ। So a lot of questions are coming around this fact that what is the test, why it is so difficult, or can you help me pass the test? ऐसे भी ओह हमारे पास माय लोग आए हैं जो आए हैं गॉड! कि सर वो पिंग करें, सर कैन यू हेल्प मी पास द टेस्ट? मैंने कहा अरे ऐसे काम नहीं करने हैं। But I mean, what has been your experience so far when you were joining? Was there the entrance thing, the interview thing, or how was that journey onboarding thing? Did you also have an entrance? Because earlier when I interviewed another student quite a bit ago, maybe they didn't have that entrance thing. But what was your situation for the joining part?
हाँ, हमारे टाइम पे प्रॉपर टेस्ट था, फिर इंटरव्यू भी हुआ था एंड उसके बेस पे हम लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। सो टेस्ट वाज़ कि पूरा एप्टीट्यूड ही है, बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आप जैसे कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कितना एप्टीट्यूड करते हैं, उतना ही करेक्ट। लेवल का करने की ज़रूरत है और उससे भी मतलब इतना इनफ है क्योंकि आपको ना अभी से आप एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम दे दिए, फिर जनरली कैंपस में क्या होता है कि आप पहले एप्टी देते हो, उसके बाद कोडिंग टेस्ट देते हो, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यूज़ और वो सारा सीन आता है। बट यहाँ पे जैसे आपने पहले से ही एप्टीट्यूड दे दिया, तो आपको सिर्फ इसी में एफर्ट्स डालना है। एक्चुअल जॉब में जो कंपनीज़ आती है, मोस्टली सब में प्रोसेस स्टार्ट होती है कोडिंग असेसमेंट से। तो राइट। आई से कि आप मतलब ट्राई करो, बेसिक ही एप्टीट्यूड है, तो क्लियर अगर आप जनरली कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, उतना ही लेवल होता है। सो यू कैन डू इट। उसके बाद जो मॉड्यूल्स हमारे हमारे पास तो ऐसा सिस्टम था कि आप टेस्ट दो, उसके बाद आपके पास मॉड्यूल ओपन होंगे, नॉर्मली जावा बेसिक के। तो वो आप बेसिक जो मॉड्यूल के अंदर मतलब 1-2 घंटे के ही वीडियो होते हैं और उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है या कोई सिंटैक्स सिखाया जाता है और उसके आंसर्स और उसके बेस पे क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन के करेक्ट। आंसर्स भी होते हैं, बट आई से कि ओके आपने जैसे पढ़ा है तो आप ट्राई करोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो राइट। वैसा ही है और उसके बाद जैसे आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर दिए, उसके बाद आपके लिए एक इंटरव्यू पैनल खुलता है। तो उसमें आपने जो पहले मॉड्यूल में सीखा था, उसके बेस पे ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं कि डीएसए का अलग ही डेटा स्ट्रक्चर पूछ लिया कि जो पता ही नहीं है। उनको भी पता है कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, तो दे जस्ट वांट टू चेक योर कैपेबिलिटी कि आप सीखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो रादर देन कि आपको कितना आता है। आपको तो वो सिखा ही देंगे एट द एंड, बट आप कैसे सीख रहे हो, आपका अप्रोच क्या राइट। है? I guess they just want to check these things. That's why they are taking assessment. Yeah, I think that's a fair, I mean, a point that you made that, I mean, if you go through the modules well, I mean, you do your basic aptitude thing correct. And one question I want to ask you that is also from the student experience point of view that one thing that before joining a job, जो आपके मन में as a चीज थी जो myth थी जो ब्रेक Yeah. हो गई राइट आफ्टर दिस जर्नी राइट ऑफ ऑलमोस्ट अ ईयर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया मतलब 180 डिग्री टर्न हो गया आपका थॉट प्रोसेस क्या वो चीज थी आपके मन में जब आप शुरू कर रहे थे तब से और अब तक व्हाट हैज Yes. चेंज ड्रास्टिकली ऑन योर माइंड अबाउट दिस प्रोग्राम अबाउट दिस इंडस्ट्री हुँ। एक एक मुझे ऐसा मिथ था कि आई शुड टेक एन एटलीस्ट सपोज़ सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो आपके ना बहुत सारे मतलब रिलेटिव्स हैं या बहुत सारे गुड विशेज़ हैं, वेल विशेज़ हैं, वो आपको ऐसा बताएँगे कि आप पहले 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप यहाँ पे जाओ, स्विच करो। तो व्हाट आई अंडरस्टूड बाय दिस जर्नी इज़ कि आईटी इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है कि आपको कितना आता है और रादर देन कि आप कितना एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इयर्स जैसे जॉब किसी ने जॉब 5 साल कर लिया, उसके बाद उसको स्विच करना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ लाइक गुड गुड थिंग और इवेंट सिनेरियो राइट नाउ। अगर कोई इंसान को अगर कोई कैंडिडेट को आता है डीएसए डेवलपमेंट, तो वो आसानी से 12 प्लस या आई कैन मोर से कि अगर और ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब अगर 1 साल और अच्छा-सा मेहनत करते हैं, तो वो टॉप नॉच एमएनसी में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जा सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको इतना ही एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी साइड से कितना एफर्ट्स डाल रहे हो लर्निंग के लिए। अगर आप अच्छा खासा एफर्ट डाल रहे हो लर्निंग के लिए, तो आपको शांति से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल सकती है। फ्रॉम फ्रेशर प्रोफाइल, लाइक इट इज़ करेक्ट। नॉट कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के बाद सीनियर प्रोफाइल्स में ही जाना पड़ेगा। आपको डेवलपमेंट तो करेक्ट। करना ही है एट द एंड, तो आप फ्रेशर से भी जा सकते हो। Correct. So, final words from you. I think Utsavi. I mean, you have been really helpful. I mean, I'll be honest with you. I had to ask less questions. You were very much helpful to support and share all your views. So, can you maybe give us your, I mean, last recommendation or thought process about this AccioJob as a platform? What you think, and if the students who are young wanting to join this boot camp and change their career into full stack development or the IT development, what are your final words? Because we've taken a lot of time of yours, so could you just give your final recommendation, final thoughts, what you believe and what these students should do? What I believe is कि if you have decided to join a course like AccioJob, take a good time to understand all of these things कि okay, I should go or not. But once you decide, just focus on the learning rather than don't have any single second thought कि मेरा job लगेगा नहीं लगेगा.
no, once you have decided, just focus on the thing कि अभी मैं ये सीख रहा हूँ, and if you can improve more कि अपन अगर और अच्छा आगे सीख सकते हैं, तो you can do that. एंड आई मस्ट से कि लोग ऐसा नहीं करते, बट आई कैन से कि आपको 15-20 डेज में बैच मैनेजर से बात करनी है, बिकॉज दैट इज द ओनली पर्सन हु कैन गाइड यू थ्रू आउट द होल जर्नी. उन्होंने देखा है कि आप कौन से मॉड्यूल में कैसा परफॉर्म कर रहे थे, आप और अब कितना कर रहे हो, और आप और ज्यादा इनपुट कैसे कैसे डाल सकते हो. तो आई मस्ट से कि आपके बैच मैनेजर से कॉन्टैक्ट में रहिएगा एवरी 15-20 डेज. दे हैव दिस थिंग कि आपको एवरी 15-20 डेज में कॉल आएगा, बट आई से कि मैं तो सामने से ही कर देती थी बिकॉज मुझे तो अपडेट्स चाहिए थे कि और कैसे अच्छा कर सकते हैं, और कैसे Right, अच्छा कर सकते हैं. right, right. So once you have decided, just focus on learning. Correct. So, Suvi, I think it has been a great experience speaking to you, honestly, and people have got a lot of inputs. Yeah, we just put the programs on the screen. If all of you have got any value or want to actually have to go through this program, the website link is there in the description box. You can register there. They have some free sessions, right? I think initial Hmm. phase, they have some sessions, right? Modules that you can go through before you make up your mind for an ISA or to continue. It would be a great idea if you can really go through this website, actually check out the program, and also if possible we'll try to put service maybe LinkedIn or something, where probably if some students would like Sure, to reach sure. out to you, probably but I would only tell you that please reach out with genuine queries here, because I think Utsavi has been kind enough to join and support us for I mean helping the students understand, and she has been very upfront and open about it, right? So that is a good thing. That so we thank you so much for joining in. We'd like you guys to maybe share this video with all of your friends, like, comment, and subscribe to this channel. And Utsavi, if you want to share your experience, what has been discussing with me before that, I mean, you could do that before we close. Yeah, sure. You were very kind enough and supported me like throughout the whole interview because I didn't have any single. This is my first time I'm giving someone interview, and that was pretty good. Thank you for your experience. Thank you for all. Thank you, Utsavi. I think I'm sure you have many more interviews to come, and you have been a very Sure, dedicated sure. individual, and you're doing well for yourself, trying to help out others also. That's also a good thing, because see, doing well for themselves is one part of things, yeah, that people do. But then after that, people are very hesitant to share their secret, yeah, share their story, because they are a little bit like, नहीं नहीं तुम भी कामयाब हो जाओगे. तो उस नजरिए से यू हैव बीन वेरी ओपन, यू हैव बीन वेरी क्लियर इन योर डेडिकेशन, राइट? वो दिखाई दे रहा था. So thank you so much, Savi, for joining in, and we'll try to put all the links in the description box. Do check it out, and thank you so much, everyone, for joining in, and do subscribe to the channel for such content that is meaningful and helping you grow in your career. Thank you so much, and bye bye. Thank you so much. Bye bye.